तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली सिर्फ फिजिक्स के लिए आई या फिर केमिस्ट्री के लिए या मैथ्स के लिए? ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चारों सब्जेक्ट के लिए विच इज पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ओके, नहीं There are number of chapters, तुमको जो है बहुत सारे चैप्टर्स डिफिकल्ट नजर आएंगे, जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिनको तुमको सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी आती है। ओके, तो ऐसा मत समझो कि सब्जेक्ट तुमको डिफिकल्ट लग रहा है या जो टॉपिक तुम गो थ्रू करो तुमको समझ नहीं आ रहा है। इट इज लाइक दैट, तुमको अब तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, तुमको करना क्या एग्जैक्टली, व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, तुमको एग्जैक्टली क्या करना है। 2 महीने ना तुम्हारे पास, 2 महीने के अकॉर्डिंग तुम्हारी स्टडी क्या होनी चाहिए? बेस्ट या स्मार्ट स्टडी। एक तो 2 तरीके की स्टडी होती है, फर्स्ट इज स्मार्ट स्टडी एंड सेकंड वन इज गधा मजदूरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो गधा मजदूरी नहीं करना है हमको, वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क। एंड हाउ टू डू स्मार्ट वर्क? You have a 16 chapters in each and every subject: chemistry, physics, biology and math. Yes? और तुम्हारे सब्जेक्ट में तुमको कितने चैप्टर्स मिलते हैं? 16 चैप्टर्स। 16 चैप्टर्स 2 महीने में तुम्हारा करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है तुमको स्ट्रेटेजी आना चाहिए, तुमको कैसे अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर रखना है। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने जो है 25 स्टूडेंट को, ठीक है, जो बहुत ही वीक थे, उन्होंने कुछ भी स्टडी नहीं किया था, लास्ट मिनट में मैंने उनको गाइड किया था। एंड नाउ दे स्कोर्ड इन योर 12th स्टैंडर्ड, इन देयर 12th स्टैंडर्ड मैक्सिमम 65-70%। दोज हु आर वीक, तो स्कॉलर का तो सवाल ही छोड़ो, इफ यू आर स्कॉलर सोचो तुम कितना स्कोर कर सकते हो। ओके, तो तुम्हारा मोर फोकस किधर होना चाहिए? टर्म्स पेपर क्वेश्चन। क्या होना चाहिए? हमारे वार्षिक बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे पेपर सेट होकर आते हैं HSC बोर्ड के, वो ज्यादातर बेस्ड होते हैं उत्तम पेपर। ओके, तो उत्तम पब्लिकेशन इज द बेस्ट पब्लिकेशन, जहाँ पे तुम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक ज्यादा मिलेंगे। 60 to 70% उत्तम पेपर चलने से तुमसे पूछा जाता है बोर्ड में। ओके, few people ये सोच रहे what about English? Okay, what about IT? What about computer science? तो जो IT स्टूडेंट है, रिमेंबर वन थिंग, जो तुम्हारा IT सब्जेक्ट है वो तुम्हारा जो एप्टीट्यूड बेस्ड है, जहाँ पे तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम इजीली पास आउट हो जाओगे। ओके, बिकॉज MCQs है और वो तुम्हारी कॉलेज में ही IT के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। यस, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है उनको भी जो है ज्यादा कंसिडर किया जाता है, बिकॉज एट द लेवल ऑफ 11th and 12th वहाँ पे कंप्यूटर साइंस और IT को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, बीटेक में ज्यादा दिया जाता है। ओके, मेन फोकस किधर होता है? पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। ओके, ज्यादा नहीं पढ़ना है, do only 8 to 10 chapters in each and every subject. Okay, physics में भी तुमने अगर 8 to 10 chapters किया, which is enough for you. अगर तुम मैथ्स में तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। My specialization subject is mathematics. मैं तुम लोग को 50 क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगी, तो ये आसान है। ओके, तो ऐसा नहीं कि अब क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, पढ़ना ये है कि जो मैं तुम लोग को देने वाली, which is enough, and you can score more than 90, 95, 98 in mathematics. ठीक है, बट मैं फिजिक्स में तुम लोग को इतना गाइड कर सकती हूँ कि तुम लोग more than 70 स्कोर करो। ओके,
rotational dynamics. Okay, मैं जो है तुम्हारा फर्स्ट फिजिक्स स्टार्ट करूँ फिजिक्स का हमारा रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक का रिकॉल करने को अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ठीक है तो टेक्स्ट बुक पर खोल कर देखेंगे और ओके तब पेपर सॉल्यूशन को कैसे स्टडी करना है क्या करना है उसमें multiple choice question. All multiple choice questions of physics you have to do from some paper solution. MCQ type is going to be by is okay. Okay, just because some paper solution for multiple choice question of physics. जहाँ पे तुम लोग को physics में 70 marks का पेपर है 70 marks के पेपर में तो 10 marks का MCQ होता है physics का जिसमें से तुम लोग को 2 और 3 numerical question होते हैं and rest of all question based होता है theoretical. Okay, तो बहुत से student को difficulty आता है MCQ don't think that physics का MCQ physics का जो सबसे boring part है which is section B और section D. Which part? There are 2 marks question और 4 marks question. 4 marks question में तुमको ऐसा होता है डेरिवेशन पूछा जाता है डेरिवेशन के साथ साथ जो है इसको एक प्लान करना होता है ठीक है नाउ कम टू द फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज द रोटेशनल डायनामिक्स ठीक है यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट टॉपिक और दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल एक्सप्लेन ओके so your first topic centripetal force or centrifugal force okay don't go by next get to be a हिसाब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस पे जाइए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओके नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स या वेरी गुड नाउ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल is called as centripetal force for example अगर मैं तुम्हारे हम एक सर्कुलर क्वेश्चन में बैठे हैं ठीक है सर्कुलर शेप इफ आई अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू अगर मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूं इट इज कॉल्ड एज आई एम अ सेंटर मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता हूं तो बिकॉज़ सर्कल और सर्कुलर शेप में कौन बैठा हुआ है तुम बैठे हो ओके यू आर ऑब्जेक्ट एंड वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर के टुवर्ड्स में क्या हो सकता है अट्रैक्शन Clear everyone? Best example. Solar system. Am I correct? और अपनी पोजीशन से कहीं भाग रही है आप? No. वो किससे attracted है? Sun. Sun is the center of solar system and Earth and increase होगा. हमारी physics का मतलब हमारा पूरा physics आधे से ज़्यादा डिपेंड करता है inversely proportional direct. Am I correct? है ना? In majority definition, you will find that this is inversely proportional to this. This is directly proportional. Yes? है ना? तुम्हारे लिए always remember that. एक हमारे पास होता है LHS और एक होता है RHS. ठीक है? अब LHS और RHS में कुछ डिनोमिनेटर के पार्ट्स होते हैं और कुछ न्यूमरेटर वो डिपेंड करता है LHS ओके फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला FCP is equal to FCP means centripetal force what it is centripetal force it is equal to mv square upon r yes FCP किधर है न्यूमरेटर में mv square किधर है न्यूमरेटर में what is in the denominator r
हमेशा याद रखेंगे जो भी तुम्हारा पैरामीटर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। It means that force is directly proportional to mass and velocity, product of mass and the square of velocity, and inversely proportional to the distance between them. समझा? Are you sure? What is SPP? mv square upon r. Now what is centrifugal force? कभी कपड़े धोए अपने वायर दिखा उसका पूरा वायर अच्छा क्या होता है वायर वो कपड़े होते ना पूरा पूरा के ऊपर आ जाते ये क्या हो रहा है अप एंड डाउन होते रहते हैं है ना वाइब्रेट होता है कटने का वो होता क्या एक्चुअल में अवे फ्रॉम द सेंटर अभी अगर सपोज जिसमें कोई टेंशन नहीं लगता हो ठीक है तो क्या चलेगा which is the centrifugal force okay this is the distance which जो पेपर पे आता है 1 year नहीं आता then 1 year फिर से 1 year आता है consecutively okay तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों में डिस्टिंक्शन तुम लोग को याद करना है तुम मार्क्स मिलेंगे 4 पॉइंट कितने 4 क्लियर अभी अगर मैं तुम लोग को झूठ बोलने बोलूं ठीक है झूठ बोलने बोलूं वाली तो बट इन दैट बराबर मुझे 8 से 10 पॉइंट है ना okay come to the next topic banking of road which is a very important topic what is banking of road what is banking of road curve road very good अभी this is a straight road correct yes अगर इसमें खाली vertical travel करना तो straight direction में चाहिए है ना लेकिन somehow अगर इस straight road पे अगर turning point आता है ठीक है ध्यान देंगे आप ये straight road पे अगर turning point आता है तो आपकी कार की स्पीड क्या हो जाती है स्लो जाती है ठीक है कार की स्पीड मैक्सिमम रखने के लिए किसका यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है बैंकिंग ऑफ रोड वो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए इट शुड बी मैक्सिमम अंडरस्टूड समझ में आ रहा है सबको क्या ठीक है जो रेसिंग वगैरह चलाते हैं कॉन्सेप्ट करते हैं तो मैं करे ठीक है वहां पे वो लोग मैक्सिमम स्पीड चाहिए यस तो अगर एक कार ठीक है कर्वी रोड पे ट्रैवल करेगी तो क्या होगा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी बिकॉज द पाथ इज सर्कुलर या जिसको नीचे कार का कुछ वेट है कार के वेट पे ग्रेविटी इन्फ्लुएंस हो रही है एंड दैट ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यस सबको पता है ना इतना कार के जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्सर्ट होती है वो किस पे एक्सर्ट होती है मास पे एक्सर्ट होती है mg which is acceleration due to gravity ऊपर की तरफ से भी उसके ऊपर प्रेशर आएगा what is banking of road you can write it as I said okay so your next topic is very important topic angle of banking and banking of road okay your next topic is moment of inertia what is moment of inertia तुझ्यावर लावायचं yes student I'm on my own axis yes responses are improper
Yes, ma'am. ठीक है, मैं ऐसा बोलो। नो नो नो, आई एम जस्ट रोटेटिंग ऑन माय ओन एक्सिस। Which is called Moment of inertia. what is inertia? एक body है जो steady motion, इसमें है rest motion, ठीक है? I am moving, I am in a non-conscious state of motion. मैं जो है अभी inertia में नहीं, ठीक है? I am timer by not inertia. ठीक है, जब तक I am in a static motion यानी मैं कॉन्स्टेंट वो जो बॉडी है क्या होना स्टार्ट करना है अपने एक्सिस से रोटेट कर। आई हैव सम मास, अगर मैं फिर से मोटे इंसान को खड़ा कर दूं तो उसको टाइम लगेगा रोटेट होने में एंड मुझे उससे ज्यादा मेरी स्पीड रहेगी। यस, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मेरा जो एक्सिस है ये एक्सिस से मैं इतने डिस्टेंस से क्या होगी गोल गोल रोटेट होगी। ओके, तो वो डिस्टेंस क्या होगा? आज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस is called as moment of inertia. What is moment of inertia? Product of mass and the square of the distance of rotating object is called as moment of inertia. Got it? Your next topic, मैं बहुत detail explanation देंगे because ये चारों subject बाकी नहीं चलो numerical की जल्दी से chapter फाइंड आउट। First and second chapter, fluid. Next is thermodynamics. Right now. Next one is thermodynamics. Third KTCR, kinetic theory of gases and radiation. Magnetic material. Dual nature of matter. Structure of atom. बस इतने चैप्टर, कितना चैप्टर थे बताओ काउंट? 6 ना, ठीक है। अगर एक टोटल एक चैप्टर में तुम लोग को पता है हार्डली 12-14 न्यूमेरिकल, वो भी ना तुम लोग को थर्मोडायनामिक्स में बहुत कम न्यूमेरिकल, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में कम है, केटीजीआर में बहुत ज्यादा नहीं, कम है, इजी है न्यूमेरिकल। ओके, तो अगर तुम एक दिन में 2 चैप्टर का भी न्यूमेरिकल कवर करते हो तो 3 डेज में तुम लोग कितने चैप्टर का न्यूमेरिकल कवर कर सकते हो? 6 चैप्टर का न्यूमेरिकल कर सकते हो, विच इज द टाइम कंज्यूमिंग। व्हाट है, समझा? सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल करके